Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to physics class. Today our topic is the time period and frequency of mass attached to spring. तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि द मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो आज हम उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे. सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. These are also the characteristic of simple harmonic motion, yeah, the characteristic of mass attached with spring. First one, time period. This is called object attached with the spring. मास को स्प्रिंग के साथ अटैच्ड कर ले. दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, पोजीशन ओ. फोर्स अप्लाई कर ले, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर ले, ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन ओ टू अनदर पोजीशन एंड दैट इज कॉल्ड पोजीशन ए. यहां ये एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल. अगर ये एफ एक्सटर्नल अप्लाई कर ले देन ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस फ्रॉम ओ टू ए. बाय रिमूविंग दिस एक्सटर्नल फोर्स there is another force which is called spring force or which is called restoring force. So due to the restoring force, object oscillate from A to O and then oscillate from B to A. Object oscillate from A to B and then from B to A. So time taken by oscillatory object from A to B and then from B to A. This time taken is called time period. So time required for one complete oscillation A to B and then from B to A. Time required for one complete round trip is called time period. इस तरह डिफाइन करेंगे. टाइम टेकन बाय ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट which complete one राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल चक्कर. टाइम टेकन बाय ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट बाय एन ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट विच कंप्लीट वन राउंड ट्रिप इज कॉल्ड टाइम पीरियड. इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. Denoted by capital T. How we derive the formula for time period? So following steps are used. Mathematically, we can derive as ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनीशन है. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड देन माइनस एक्स. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर with minus sign. What is omega square? This is constant. Put the values of this constant. तो यहां पर ये
सर्कुलर पाथ से हम इस तरह मालूम कर सकते हैं, अगर जिस्म ए से वापस ए तक आ जाए, यानी वन कंप्लीट साइकिल ऑब्जेक्ट कवर्ड कर ले, तो तब ये फॉर्मूला है आपके पास, S इज इक्वल टू V into T, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। हाँ, ये फॉर्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं, ए से बी तक ये इस सर्कल का टोटल सरकम्फ्रेंस है, एंड दिस इज इक्वल टू द सरकम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r। और एक इक्वेशन है लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का, वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, और ए से ए तक एक कंप्लीट साइकिल है, देन दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो r को r के साथ कैंसिल कर ले और ओमेगा पर डिवाइड कर ले, टाइम t पर डिवाइड कर ले, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई t। तो ये कांस्टेंट जो है ये इस सर्कल से डिराइव कर ले। किस तरह डिराइव करेंगे? देखो बेटा, ए से वापस ए तक ये सर्कल का मुकम्मल सरकम्फ्रेंस है, और ये डिस्टेंस है हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई r से, और v जो है ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा है, और t टोटल टाइम है विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसको रिप्लेस कर ले 2 पाई r से, v को रिप्लेस कर ले r ओमेगा से, और टाइम को रिप्लेस कर ले टाइम पीरियड से, r को कैंसिल कर ले, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई t। By putting the values of omega and then squaring, we get, इसका स्क्वायर भी ले ले, 2 पाई t whole square and then x, so a is equal to minus 4 pi square divided by t square x. This is called first equation. ये इक्वेशन कहां से है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का डिफिनीशन है। फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। तो इक्विलिटी को कन्वर्ट कर ले, प्रोपोर्शनलिटी को कन्वर्ट कर ले इक्विलिटी और कांस्टेंट में। कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर को इस रफ वर्क में से डिराइव कर ले। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4 pi square t square into x. Also, from mathematical form of the acceleration when object oscillate from a to b and then from b to a, तो उस मैथमेटिकल फॉर्म में ये आपके पास कैलकुलेशन है। Also, from mass spring सिस्टम, हाँ ये फार्मूला आपके पास है। रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूसेस द नेट फोर्स, एफ नेट इज ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स। तो एफ नेट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, रेस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दैट इज वाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम, दोनों साइड को m से डिवाइड कर ले, n टू x। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन b। नाउ कंपेयर इक्वेशन a एंड b, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर ले। कंपेयर इक्वेशन a एंड इक्वेशन b। तो यहां पर आपके पास ये इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इनटू एक्स, और यहां पर ये इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर इनटू एक्स। तो कैंसिल कर ले, x को x के साथ, माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर ले, देन वी गेट k बाई m इज इक्वल टू
4 pi square divided by t square. अरेंज कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये टी स्क्वायर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, एम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहां 4 पाई स्क्वायर एम, और के को डिवाइड कर ले, डिवाइडेड बाय के. अब स्क्वायर रूट ले ले, टेकिंग स्क्वायर रूट फॉर बोथ साइड, दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय के. तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है, पाई स्क्वायर इज कॉल्ड ओनली पाई, एंड देन वी गेट मास डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के. So this is called what? Formula for the time period of mass attached with spring. This equation gives us the time period of mass attached with spring. अगर जिस्म A से B तक आ जाए और B से A तक आ जाए तो कंप्लीट साइकिल में ये जो टाइम ले रहा है वो टाइम पीरियड है, और वो बराबर है 2 पाई m डिवाइडेड बाय k. Now the second one is called the frequency of mass attached with spring. अगर ये A से B तक आ जाए और B से A तक, अगर 1 सेकंड में ये 4, 5 या n नंबर ऑसिलेशन कर ले, so the number of oscillation, the number of cycle, the number of round trip in 1 second is called its frequency. तो मास अटैच टू स्प्रिंग का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फ्रीक्वेंसी है. एंड हाउ वी डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. द सेकंड वन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग. हम इस तरह डिफाइन करेंगे. Second one is called frequency. Definition: number of oscillation by oscillatory object in 1 second is called oscillation, is called its frequency. Number of oscillation completed by oscillatory object in 1 second is called its frequency. Or also we define as the reciprocal of time period. The reciprocal of time period is called its frequency. हाँ जी, the inverse या the reciprocal of time period is called frequency. So frequency is equal to, इसका उलट ले ले, इसका इनवर्स ले ले, 2 पाई है सो 1 बाई 2 पाई, m बाई k है सो k बाई m. This is called the reciprocal form. So this equation is called what? This equation is called frequency for the mass attached to spring. Equation 2 is called frequency and equation 1 is called the time period. बेटा पॉइंट नोट कर ले कि टाइम पीरियड डिपेंड ऑन मास. अगर हम मास को इंक्रीज कर ले then time period also increases. अगर हम मास को 4 गुना इंक्रीज कर ले then time period increases 2 times. और frequency is the inversely related with the
मास, इसका ताल्लुक मास के साथ क्या है? इनवर्सली। टाइम पीरियड को हम मेजर करते हैं सेकेंड में। द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड सेकेंड, while the unit of frequency is called the hertz या साइकिल पर सेकेंड या ऑसिलेशन पर सेकेंड या वाइब्रेशन पर सेकेंड। सो ये बेटा दो कैरेक्टरिस्टिक है, मास अटैच विद स्प्रिंग के साथ, एक टाइम पीरियड के साथ है और दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।